नमस्कार मु पिंकी आपण मानक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस को। तो आज आम ओटेड सिलेबस 2025 रो पेपर 1 आ पेपर 2 डिस्कशन करबा। प्रथमे आम सिलेबस स्ट्रक्चर देखिबा पेपर 1 रो। तो पेपर 1 जो माने देबे से मानक पई रहिछि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बा सीडीपी जहाँ 30 मार्क 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज 1 ओडिया 30 मार्क 30टा क्वेश्चन से आमर 20टा क्वेश्चन आसीबो कंटेंट रू आउ 10टा क्वेश्चन आसीबो पेडागोजी रू। देन सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश आमर 30टा क्वेश्चन 30 मार्क से मध्य 20टा क्वेश्चन आसीबो कंटेंट रू आउ 10टा क्वेश्चन पेडागोजी रू। देन मैथमेटिक्स भी सेम 30टा क्वेश्चन 30 मार्क से मध्य कंटेंट आउ पेडागोजी दुईटारू आसे। एनवायरमेंटल स्टडीज मध्य सेम 30टा क्वेश्चन आउ 30 मार्क। देन डिटेल्ड सिलेबस देखिबा पेपर 1 रो। सेक्शन ए होची सीडीपी रे रहिची यूनिट 1 रे अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड फोकस ऑन चिल्ड्रेन एट प्राइमरी लेवल। से रहिबो कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स एंड स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट characteristics of physical, cognitive and moral development in childhood, then influence of heredity and environment in understanding the child. Unit 2 होची understanding learning process and learners. Learning रा concept, nature and individual differences in learning. Then understanding how child learning through observation and imitation. Then understanding children learns various methods of learning. Then basic conditions of learning and promotion of learning through motivation, classroom learning environment and teacher behavior. Then होची development of a creative thinking. एटा वाला यूनिट 2। देन आसीबो यूनिट 3 रे होची कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। फर्स्ट होची कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, सेकंड होची एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्निंग इन इंक्लूसिव क्लासरूम सेतिरे सीडब्ल्यूएसएन गर्ल्स और एससी/एसटी। देन एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव लर्निंग। यूनिट 4 आसीबो अप्रोचेस टू टीचिंग एंड लर्निंग, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड एंड लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच। देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच। देन टीएलएम रे जिवो इट्स इंपोर्टेंस यूज एंड प्रिपरेशन फॉर क्लासरूम ट्रांजैक्शन, टीचिंग कॉम्पिटेंसी टू हैंडल मोनोग्रेड एंड मल्टी ग्रेड सिचुएशन। यूनिट 5 होची असेसमेंट, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, purpose of assessment, assessing scholastic and other scholastic areas, then sharing of assessment outcomes and follow up. सेक्शन एटा वाला पेडागोजी, सेक्शन ए हैला हमरो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। देन सेक्शन बी होची लैंग्वेज ओडिया, ग्रुप ए रे आसीबो ओडिया पेडागोजी। यूनिट 1 होची लर्निंग ओडिया, aims and objectives of teaching Odia as a mother tongue, principles of language teaching, then acquisition of a fourfold language skills in Odia language ro charita skill, listening, speaking, reading and writing. Then interdependence of 4 language skills, objectives and strategies of transacting integrated text for the beginners. Unit 2 होची teaching, reading and writing skills, technique of developing intensive and extensive reading skills, teaching learning composition and creative writing, critical perspectives on the role of grammar in learning language for communicating ideas in written form. Then challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties and errors. ग्रुप 3 आसीबो हमरो ओडिया रो कंटेंट रू, सेटा गला ओडिया पेडागोजी। एटा आसीबो कंटेंट रे आसी जिवो असेसमेंट, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम्स। देन रिमेडियल टीचिंग। यूनिट 4 आसीबो लैंग्वेज आइटम्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, formation of words using prefix and suffix, synonymy and antonymy, then phrases and idioms.
यूनिट 5 होची लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग 2 अनसीन पैसेज 1 फ्रॉम प्रोज एंड 1 पोएम दीटा पैसेज पढ़िबो गोटे प्रोज रु आ गोटे पोएम रु सेक्शन 3 हैला इंग्लिश ओडिया पेडागोजी और कंटेंट पढ़ेला एबे आसीबो इंग्लिश रो ग्रुप ए मध्यम पेडागोजी तार यूनिट 1 होची लर्निंग इंग्लिश एट द एलिमेंटरी लेवल इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश यूनिट 2 होची लैंग्वेज लर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम यूनिट 3 होची स्किल्स इन लर्निंग इंग्लिश फोरफोल्ड बेसिक स्किल्स ऑफ लर्निंग लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्किल्स देन टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज फॉर डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स रिसाइटेशन स्टोरी टेलिंग एंड डायलॉग then development of reading skills reading for comprehension technique and strategy for teaching and reading phonic alphabet word sentence and story development of writing skills teaching composition unit 4 होची assessment of english assessing language comprehension and proficiency listening speaking reading writing ग्रुप बी होची इंग्लिश रा कंटेंट यूनिट 5 होची कॉम्प्रिहेंशन मध्य ओडिया भली दुईटा अनसीन पैसेज पढ़िबो 6 होची लैंग्वेज आइटम्स नाउन एडवर्ब वर्ब टेंस एंड टाइम प्रीपोजिशन आर्टिकल्स एडजेक्टिव एंड पंक्चुएशन देन ओडिया गला इंग्लिश गला सीडीपी गला एबे आसीबो सेक्शन डी मैथमेटिक्स रा मध्य ग्रुप ए पेडागोजी तार यूनिट 1 होची मैथमेटिक्स एजुकेशन इन स्कूल्स क्षेत्र जीव नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स यूनिट 2 होची मेथड्स एंड अप्रोचेस टू टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स से आसीबो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव एनालिसिस एंड सिंथेसिस मेथड आउ प्ले वे मेथड अप्रोचेस रे आसीबो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एंड एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच यूनिट 3 होची असेसमेंट आसीबो असेसमेंट इन मैथमेटिक्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम्स प्लानिंग फॉर रिमेडियल एंड एनरिचमेंट प्रोग्राम्स इन मैथमेटिक्स ग्रुप बी होची मैथमेटिक्स रा कंटेंट तार यूनिट 4 आसीबो नंबर सिस्टम देन फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन नंबर्स फ्रैक्शनल नंबर्स एंड डेसिमल्स सेतिरे ऑपरेशन इन फ्रैक्शनल नंबर्स एंड डेसिमल्स factors and multiples HCF and LCM then percentage and its application unit 5 होची measurement of length weight capacity measurement of area and perimeter or rectangle and square then measurement of time like concept of AM PM and time interval unit 6 होची shapes and spatial relationship से जीव बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जमती पॉइंट लाइन सेगमेंट्स रे स्ट्रेट लाइन एंगल्स देन ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल्स सिमेट्री देन ज्योमेट्रिकल स्लाइड्स लाइक क्यूब क्यूबॉइड स्फीयर एंड सिलिंडर कोन यूनिट 7 होची डाटा हैंडलिंग एंड पैटर्न्स जीव पिक्चोग्राफ बार ग्राफ हिस्टोग्राम पाई चार्ट देन इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज ग्राफ्स पैटर्न्स इन नंबर्स एंड फिगर्स तापर फाइनल आमर ईवीएस आसीबो एनवायरमेंटल स्टडीज रो ग्रुप ए मध्य पेडागोजी रो आसी थाए तार यूनिट 1 आसीबो कांसेप्ट ईवीएस रो concept and significance integration of science and social science then aims and objectives of teaching and learning EVS unit 2 होची methods and approaches basic principles of teaching EVS methods रे जीव survey method practical work discussion observation and project method ଆଉ approaches रे जीव activity based approach ଆଉ theme based approach यूनिट 3 होची इभालुएशन इन ईवीएस टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर इभालुएटिंग लर्निंग इन ईवीएस डायग्नोस्टिक असेसमेंट इन ईवीएस ग्रुप 3 होची तार कंटेंट रु आसीबो तार ईवीएस रो कंटेंट रो यूनिट 4 होची गवर्नेंस रो आसीबो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आउ स्टेट आउ सेंट्रल गवर्नमेंट आउ नेक्स्ट हबो जुडिशियरी
यूनिट 5 हम फिजिकल फीचर्स ऑफ ओडिशा एंड इंडिया से आसब लैंडस्केप क्लाइमेट नेचुरल रिसोर्सेस एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। यूनिट 6 हम हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया एंड ओडिशा। यूनिट 7 हूँ हेल्थ एंड डिजीज न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स बैलेंस्ड डाइट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड डिजीज वेस्ट मटेरियल एंड डिस्पोजल देन फास्ट एड देन एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। यूनिट 8 हूँ इंटरनल सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यूनिट 9 हूँ मैटर फोर्स एंड एनर्जी मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज अर्थ एंड स्काई इफेक्ट ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ देन वर्क एंड एनर्जी।